सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। हेलो, हाँ, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आवाज आ रही होगी तो अभी आ रही है आपकी आवाज। हम लोग हाँ, जय हिंद। जी हाँ, हम लोग QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो NABH का पेशेंट सेफ्टी डे का कॉन्फ्रेंस चल रहा है ली मेरिडियन होटल में, तो वहां पर हैं हम लोग और वहां का एक नजारा दिखाना चाहेंगे। ये आउटसाइड का है और अंदर जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो थोड़ी देर में जो कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी का सेशन होगा। अभी टी ब्रेक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस में सेशन होगा, तो उसमें हम लोग स्पीच को सुनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है टी ब्रेक है और ये मंच सजा हुआ है। तो हम लोग बहुत जल्दी अशोक कुमार मलिक जी वेबिनार में जुड़ेंगे आगे। अशोक कुमार मलिक जी आ गए। हाँ, अभी हम उनको देख नहीं सके। अशोक कुमार मलिक जी अपना मोबाइल ऑन कीजिए। वेबिनार अशोक कुमार मलिक जी आ गए हैं। तो ये रहेंगे आउटसाइड में, वेबिनार में जुड़े हुए रहेंगे। हम लोग अंदर रहें, जैसे ही विजोंदा का शुरू होगा हम लोग आप लोगों को सुनाएंगे, दिखाएंगे। जो सब्जेक्ट है अभी कम्युनिकेशन पे जो है पेशेंट सेफ्टी का वो प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अब जो है वो चलेगा कि किस तरह से पेशेंट सेफ्टी हो सकती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर विजोंदा का सेशन होगा। तो अशोक कुमार मलिक जी वो करेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू करें, चेयर कर रहे हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वी विल स्टार्ट। वी विल स्टार्ट। Manna ji, we will start. You can cut across once Bijanda starts speaking. और जो चेयरमैन हैं नाब के डॉक्टर महेश वर्मा जी, वो भी पहुंच चुके हैं, मुख्य अतिथि हैं महेश वर्मा जी। जी थैंक यू सर। तो महेश वर्मा जी जो हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम शुरू करें, वेबिनार शुरू करें। एक मिनट मैं मैसेज ले लेता हूँ। मैसेज प्रोफेसर महेश वर्मा जी, पॉजिटिव मीडिया के लिए क्या मैसेज? आजकल बहुत चर्चा चल रही है और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपने आप में जो पॉजिटिव काम है उसको कर रहा है। तो क्या देखिए, पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा सस्टेन करती है। पॉजिटिविटी की जो लाइफ है बहुत लंबी है और नेगेटिविटी की लाइफ बहुत सूक्ष्म है, क्षण भंगुर है। तो जब आप पॉजिटिव बातें करेंगे तो पॉजिटिविटी आपको अपने आप में इनग्रेन होगी और आपके जो भी एक्शंस है, आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी एक्टिविटीज है, वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी से ही जो है जो भविष्य है उसको हम एक सुदृढ़ और एक फुलफिलिंग बना सकते हैं। डॉक्टर महेश वर्मा जी, WHO ने जो थीम लिया है इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, तो इसको जरा समझाएं कि और संदेश आपका क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हम कुछ भी कर लें, अगर मरीज का साथ नहीं होगा तो जो आउटकम है, जो रोग का जो
जो अंतिम पड़ाव है वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोगी का रोल उतना ही है जितना सिस्टम और डॉक्टर्स का रोल है। तो इस सब के लिए रोगी का जो कंट्रीब्यूशन है, रोगी का जो रोल है, वो उसको एक फोकस करते हुए ये रखा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश वर्मा जी थे, जो चेयरमैन है नाव के। जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है QCI का नाव पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। और अब जो है मैं प्रफुल्ल जी सेठ जी जो बड़ोदरा से जुड़े हुए हैं, वो उनको हैंड ओवर करता हूं और मैं अंदर जाता हूं, जहां पर पेशेंट सेफ्टी का प्रोफेसर बिजौंदा जी जो RJS एडवाइजर हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका स्पीच है यहाँ पर, जो ऑनलाइन कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। तो यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं ली मेरिडियन में पैनलिस्ट जो हैं प्रफुल्ल पांडे जी लगातार आपको दिखाई देंगे। RJS PBH के पैनलिस्ट यहाँ पहुंचे हैं, इनवाइटेड हैं। और यहाँ पर अशोक कुमार मलिक जी पहुंचे हुए हैं। तो अशोक कुमार मलिक जी, अब जो है अब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अब आप लोग प्रफुल्ल दा, अब इसको आप चेयर कीजिए प्रोग्राम को। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। So I would like to welcome you all to this 172nd episode of the Sakaratmak Bharat. This program is held on behalf of the JANAKI SANSTHAN, Positive Broadcasting House and Patient Safety and Access Initiative of India Foundation. As you have just heard, today also happens to be the World Patient Safety Day. And the theme which has been proposed by the World Health Organization is engaging patient for patient safety. First, let me acquaint you all with the format of today's webinar. While we are having our virtual program, the NABH, which is the accreditation body for the hospital, is holding their Patient Safety Conference 2023 at Lee Meridian in Delhi. We will momentarily pause the webinar, take you to NABH conference when Professor Bijon Mishra begins to speak. Interesting title of his session is Dreaming Differently About Patient Safety. Dreaming Differently About Patient Safety. And we will resume after his talk is concluded, which may take about 10 minutes or so. So that is the format of today's webinar and the physical meeting with which we will keep joining in between. So before Bijonda starts, I would just like to raise one question, and that is, what is patient safety? What do we understand by patient safety? Patient safety in a very simple way means do no harm or injury arising out of mistakes. So harm reduction or elimination is the main objective for all of us patients. And what happens if the safeguards are not taken, whether it is in the hospital or whether it is in nursing home or whether it is through the medicines or wherever the healthcare is involved? Firstly, the patient may not understand what is the proper use of medicine. If he doesn't understand proper use of medicine, then there is going to be a problem, because today the number of medicines that we all take is like a cocktail. When you come out of doctor's chamber, you are giving so many medicines that it is very, very difficult for people who do not understand when to take it, how to take it, with what kind of diet it has to be taken. So these information, if it's missing, that's the first problem. The second is that whether you like it or not, we also have an issue of spurious, adulterated, and not of standard quality medicines in the market. Our own survey showed
that in retail you have about 3% such not of standard quality medicines, which is not of good quality medicine floating around. Even from, and this includes a sample from not only the hospitals, nursing homes, government agencies, but also from the good companies in the industry. So overall, one has to be extreme. Now, what do we do? The third thing is, as far as herbal medicines are concerned, we have a problem of heavy metals. So whenever herbal medicines are taken, one has to be very sure that the lead content, the arsenic, etc., are present only in the permissible limits. This is a big issue about herbal medicines. Side effects of medicines, there is another issue. And sometimes side effects result even in more dangerous kind of symptoms and ultimately death also. And recent example that I can quote is the medicine which we have exported to Gambia, where children died from paracetamol syrup. Now, this problem is very old. The first time it happened, it was in Haiti. God knows in early 1940 or so. And then thereafter, it continues to happen on and off. Why our regulatory agencies are not careful? Even in India, such cases are being seen or heard or read about. It is a problem where the reason is that the solvents are mixed up. You are supposed to use propylene glycol and you end up using a mixture of propylene glycol and diethylene glycol. Diethylene glycol is an antifreeze which they use in the car. So that will immediately cause problem to your biology. Then we have the use of antibiotics. Proper use of antibiotics has been another issue. I think Bijanda is about to start. Let me pause here because I see this. No, he's not. So right use of antibiotic is very, very important. You must complete the therapy. If you don't, that it builds up resistance. And there are many antibiotics in the market which are not working anymore. And we are not able to research third generation, fourth generation antibiotics. It's not that easy. So proper use of antibiotic is very important. I will narrate a small example even that I had seen while doing a project in one of the large hospitals in Delhi. The mother and child were given medicines and the mother did not understand which is the medicine for her and what is for the child. Now, we are at that level. And second thing is that they don't come back for refilling that antibiotic or what their prescriptions. So the doctor sat there with a lollipop and gave it to the child so that he will say, I want to go back. So, these are small solutions also, but this was at Ram Manohar Lohria Hospital. Then you are all aware that diagnostics, if they are false positive or false negative results, what kind of problems it creates. You think you don't have HIV and it turns out to be you have HIV, and where you don't have it, it might be false positive. So the efficacy of diagnostic test is very, very important. And the last is damages during surgery. And I think we are well aware that carelessness during surgery results in loss of eye, loss of limb, and loss of life sometimes. And those court cases then go on and on and on. And, we are then put to some problem ourselves. We have to be very careful about these things. The next issue that I want to raise, that in spite of all these things, मैं कहना चाहूंगा कि लेकिन mistakes होती है और to err is human. To err is human. हम सब गलती कर देते हैं. And patients are no exceptions. So we have to be very, very responsible. A nursing home where I visit normally in Vadodara, they have a poster out there where they have put the responsibilities of the patients. It's the first time I have seen something like this. Unfortunately, I was not able to go and take a screenshot, but I will do it and I will send it to all of you. Beautifully worded message there.
When the pharmacy is very interesting. Every strip of pharmacy, in the back of the strip, they put a small paste, a little slip where it says morning, afternoon, or evening, means breakfast, lunch, or dinner, and then they will say that they will cross mark where you are supposed to take it. So this pharmacist will do it. But these are small, simple solutions and that we need to understand. So what is the role of patients? The role of patient in healthcare, I would take it from QCI's Gunvata Sankalp, where they have articulated very nicely that we must take a Sankalp demanding quality of products and quality of service. And wherever it is in the hospitals, whether it is in nursing home, whether it is in the pharmacy, we must ensure that we get quality of products and service because we are paying for it. We are paying for it. The second thing is that when you buy medicines, make sure that pharmacy is licensed. Make sure that it's licensed and there is a registered pharmacist present in the pharmacy. Member of that, and he does not hesitate. Prafulji, can we continue? Pandeyji, can we continue? Can't hear him. So I will continue. So when buying medicine, we have to ensure that pharmacy is licensed and pharmacist is present and registered. Also, this bad habit of self-medication can be very, very dangerous. Please do not indulge in self-medication, not only for yourself, but don't advise others about medicine. The National Accreditation Board of Hospitals, NABH, they have got program where they can accredit the hospitals. So whenever we visit hospitals, we have to see that this hospital is NABH accredited. You will find that on their stationery. You will also find that in your last thing is, whenever you have a side effect, whenever you experience a side effect, be vigilant about it. Hello? And inform your doctor immediately that I am having this problem of side effect. These are the responsibilities of the patient. Most important thing, I think Bijanda is not speaking, somebody else is speaking. I can maybe pause here. Dinaji, I can pause here. Bijanda ही speak करते हैं. Okay, okay, sir. Thank you. We will pause here. You have to create an environment to say. The most important thing is what I want to suggest to you all. How do we create that environment that people speak up? The patients especially speak up. What he expected and he did not get. Or what he expected he got. हमने यहाँ NABH के SSS जो हैं, आप बताइए, all नहीं, क्यों करना हो? हमने एक SSS के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए और हमने वो भी देखा कि आपके in detail You teach people on the rights and duties of the patients and all what earlier panel members said about communication. All that is being taught to every hospital which gets accredited. What I want to propose is that in the coming 12 months, in all NABH accredited hospitals, the moment I enter that hospital, I must see a patient help desk exclusive, well-trained people who not only takes your feedback when you come in, but he is mandated that the patient cannot go back without giving his feedback or her feedback.
in terms of the quality of service, especially NABH accredited hospital. NABH accredited hospital must have a patient desk. And whatever you all mentioned in the first panel discussion, whether it is getting implemented or not, it needs to be measured without any compromise. मेरा ये कहना है कि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग तो दे देते हो, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद वो वर्क प्लेस में अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, वो हम लोग कितने देखते हैं. और till you don't see that happening, that the person who got trained is able to or enabled to or empowered to put that into practice, your training is zero. Yes or no? Yes or no? अभी तक नो नहीं निकला. Very good. See, what I want to tell you all is, we must, and this is what I would recommend to the chairman NABH, to the CEO NABH, that every NABH hospital must collate a data every month and make it transparent that इतने patients आए. हम आपको बता रहे हैं हमारा बांग्लादेश का experience. I saw a simple small hospital giving 4 coins in 4 different colors to patients when they are going away. And they just drop one of the coins inside the box. And at the end of the day, they collect how many reds came, how many yellow came, how many green came, and they put that score in the front on the top. Make things transparent, my friends. लोगों को पता लगना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो. लोगों को ये भी पता लगना चाहिए आपको कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए. बहुत जरूरी है. हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं? And if somebody is doing it, let's recognize. I remember we gave you an award. Do you remember? आप कभी आके नहीं पूछे कि इस अवार्ड फिर बाद में क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को. हम लोग ने शुरुआत किया कि NABH accredited hospital को अवार्ड मिलनी चाहिए on certain criteria in terms of patient safety, patient quality, patient satisfaction. आपको तो मिल गया, उसके बाद आप चुप बैठ गए. ये नहीं होनी चाहिए. आप कितना डेस्क चला रहे हो, वो डेस्क को भी लोगों तक ट्रांसपेरेंटली ऑन द वेब पहुंचाइए. So I would suggest, and I will end by saying, जब तक आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे और डरेंगे, जो डर गया वो जोर से, जो डर गया वो मर गया, फिर NABH मर जाएगा. NABH का ठप्पा ऐसा दिखना चाहिए, द ब्रांड, दैट NABH मतलब इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स का पहचान है. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your ever-inspiring speech. But this is wonderful. We have rapporteurs noting down everything. We have sessions being recorded, and we promise you that whatever the guidance we get from the dais for every session, we'll be churning out the white paper on that. Coming to Shabnam, Madam, you have rich experience of being on both sides. You are working steadfastly for the upliftment of senior citizens. You work very actively with healthcare sector skill council and work towards allied professional, creating, enabling, upskilling them. You have also worked on the other side at the hospital boards and everything. What's your dream, ma'am, of thinking differently about patient safety? What extra, what more, what new we should be doing with specific instances on senior health, about empowering them, feeling them, making them feel valued? What more can we do? Thank you, Atul, for giving me that opening push to speak my mind. And of course, I have been prepped up by Bijon sir while sitting in the first panel. And so please do ring the bell. I have a tendency to be verbose and go a long ways. So I'll just start with something which I think would resonate with what we are talking today. And it's a quote by Albert Einstein.
The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them or we envisaged them. So the thinking has to change. The healthcare industry, today everybody is very familiar with things like disruption, vulnerability, which space I am in, right? Healthcare, luckily, is not a space which is actively looking at disruption. It's vulnerable. It's hugely vulnerable, but it is not a space where disruption is needed. Disruption, why? Because you want to feel safe and you don't want to feel fearful, as Bijon says. So, whatever we spoke in the first panel, and this is when I'm putting my dreaming hat, when you look at patient safety, what are you looking at? You're looking at areas where we fail to deliver for the patient for what they have come to you for. Right? So you're trying to firewall them. So when you're trying to firewall them, our entire emphasis has been towards active failures. Communicate नहीं किया, वापस उसकी discharge हमने नहीं गई थी. We will resume, and I would request Ashok Kumar Malik ji. I think he has joined now the webinar. मलिक जी, अशोक कुमार मलिक जी, आपके ख्याल हमसे शेयर करिए प्लीज ऑन पेशेंट सेफ्टी. Thank you, Manna ji, and thank you, Prafulji Seth ji. This is a very important aspect we have gathered to discuss. And we have been invited, RGS PVH has been invited by NABH today, and we have listened to them and listened to Bijon Mishra ji also. And they began with a very important and vital aspect concerning patient safety, and it concerns all people, including family, nurses, in fact, starting with the family and then going to the hospital and diagnostics, pathology, and then talking to the doctor and then treatment, everything, technicians, everywhere. Communication is a complex process, especially so in a situation where many people, in fact, they are not so communicative, and then there are many people who are not attentive. So this is very, very vital. Unless a communication in humans is established, then things go wrong, can go wrong, may go wrong. So that is very important. Then we come straight to the point that patient safety touches upon many aspects of the medical area. It is the advocacy or lack of it of the infrastructure or personnel or doctors, nurses, technicians, and how these things are concentrated in certain areas or where they are lacking, and what policy measures are being adopted. And all this requires coordination of the very best kind.
And particularly in a country which is so overwhelmingly populated, a great dividend. We have to turn it to account. But now, patient also means not merely a person who is, like I'm used to saying that I don't have any diseases. But when I reflect upon it, then I can't say that I'm completely free from, some kind of ailment. It's not merely that you don't have any physical, mental, or social difficulties. You see, it means a lot more complex things, It's very complex, and it has to do with poverty, There are diseases which will affect the poverty-stricken people more, and there are diseases which will afflict affluent people. And let us come down to the roots. First step, information is this, that nature has endowed us with a wonderful biological system, human being. Wonderful biological system. But our relation to the resources of Earth and our population and our nature, our psychology, our human ways of interacting with each other, with all its blessings and with all its curses, It's a very, very complicated affair. So we will have to, brainstorm ourselves at all levels, authorities, policymakers, in families, RWAs, and doctors. So then only we can come somewhere to a situation approximating some kind of safety to the individual, And you have to create resources. You have to have more medical colleges, more seats in colleges. You have to educate from the very school level how to have a very healthy lifestyle. You see, you can prevent a lot of needless expenditure, even on infrastructure and every other things, and lot of trouble in workplaces and where developmental processes are taking place. If you can maintain a very healthy lifestyle, it is very simple. But to instill it in the people, you will have to begin from childhood. For example, people should wash their hands quite meticulously, and they should be very careful about the water they drink, and whatever food, even if it is not expensive, it can be clean and some good based on some good information. It can be consumed, and it will lead to some health. Our body is wonderful, and many things are available, and we can do that. And we have to see that if we sneeze or we cough, it gets scattered even up to 3 meters, and we get all kinds of diseases. And stress is taking its toll not only on people, but even on doctors. Doctors are, I think, if I am not mistaken, they are among the most stressed people. If I am not mistaken, there's a case of a doctor who was performing 6 surgeries, cardiac doctor performing 6 surgeries a day. He died of a sudden cardiac arrest. There is stress in society. If there are poverty-stricken large sections of society. Ashokji, can you take another few more minutes, Ashokji, and then we go to Arun Malik Sahab?
and the others, Yeah, yeah, and I want to yeah, make it yeah, very interactive. rightly said. Yeah. Very, very nicely said, and true also. Though the sum and substance of what I'm saying is that one should start also from the point of educating the young, very young people how to have a good lifestyle, despite simplicity and despite not being very affluent or even somewhat people without too much of resource can also lead very clean life, joyful lives if they take interest in nature, in music, and things like that. And of course, it is not at all as simple as that, and everyone will have to do and contribute to a situation which will approach somewhere near our dream. Thank you very much. Thank you, Ashokji. Thanks a lot for your very wonderful ideas. And you have Thank you very much. Talked about the 4 C's I have noted: communication, coordination, complexity, and competency. I think these are very, very important for the society. Thanks a lot, sir. Now, I would like to bring in Arun Malik here. And Arun is a policy expert on quality management. And Arun and I had a very pleasant time working together for several years in the corporate. And in fact, I learned a lot from Arun on what we called it as a continuous improvement, culture change, and quality management, which we applied then to the entire company, including marketing and other areas also. So Arun, I think without much ado, I would like to bring you, Arun. Just take about 10 minutes and take us through your ideas on patient safety. You are muted, Arun. Arun, you are muted. Mute. Just unmute. Yeah, you're okay now. Okay. Yeah. All right. Thank you, Seth Saab. Thank you, Veena ji. And thank you, friends, for giving this opportunity. I may not be quite relevant to the subject which you are addressing today, but I'll share with you my perspective. I'm basically an electronics engineer, but I have learned a little bit about quality, specifically in hospital and various value chain activities of the patient safety or patient care. I mean, to my mind, I think the entire value chain is based on quality, beginning from education of the person and being hired in an organization and being put to operational activities after giving training and monitoring of what he is doing, and then also ensuring that his activities ensure customer success. Fortunately, I was in Japan in 1986, way back when quality movement had just begun in India. And at that time, what I saw that quality was always seen from customer point of view. When I visited SANU, customers would be invited to watch the R&D or the various activities of SANU for over 2 hours. And at the end of value chain, the president of the company, which we saw ourselves, and the operational level team of the company, they used to call it as quality control circles, would sit across and seek answers or maybe collect information from customers on what their feelings are, how the process is going, everything. I mean, how safe is the process from workers' point of view?
from customer's point of view, where can defects arise. And this whole thing was recorded. And after the recording was done, the president of the company and the operational level team would sit for 1 hour and convert those inputs into projects. And those projects would be given to quality control circles. That means people at the operational level. In a hospital perspective, there will be nurses or there will be people, those who take a patient from one department to another department, or those who dispense medicines to those who are hospitalized. The thought process in Japan was that people at operational level know what is going on wrong, what needs to be improved, and if they are engaged or involved, they feel proud about it and are committed to the improvements, are committed to a thought process of improvements, and they are recognized. When I came back after the training from Japan, my commitment to Japanese government, who had taken me for a scholarship for 6 months, was that I will not only work for the company I'm working, but I will also work for other organizations in the country. And we realized initially the thought process of the management when I came back to India was, why should we spend time on this? We are already doing great quality, our customers are there. But then there's another concept which I had learned in Japan, which was called as cost of poor quality. And which incidentally, I had an opportunity to work for Quality Council of India. I became a jury for inspection and awarding all kind of industries, which included hospitals, pharma manufacturing, beside my manufacturing experience along with SANSTHAN. And we realized, my realization, a lot of unsafe operations happen at operational level. And there were hospitals which were doing exceptionally good in terms of number of accidents, means very low number of accidents, because people at operational level were examined properly from hiring. That means from education to hiring to training to performance on the shop floor by proper measurements, and then recognizing them for good performance or good activities. I think these positive strokes, which also included feedback from customers, helped a lot. And I saw those hospitals when I went to them. I will not name any of them, but they are doing exceptionally great job. And those operators, nursing staff, showed me those project reports of what they have done to improve safety, what they have done in post admission in the hospital, what they have done in the operation theater. And the doctors also gave me data of how they have benefited in terms of their number of hours while performing job, because they are relaxed, no accident will happen because of failure at operation level. Then earlier the doctor himself said, I used to spend hours with patient or his relatives because something went wrong. The hospital is paying me to get 10,000 rupees for surgery, but I am not making any value and spending the time of the hospital on unnecessary wasteful activities. I think this was a great realization by the management also. This was similar in case of other industries in India.
that why should we do it? But this industrialist or the hospital owner had realized that if they can cut down in this time, their benefits are enormous because they also spend time after the accident has happened in convincing or maybe managing legal affairs and other activities. And cost of non-conformist, and there is also a statement which I would like to share, that a satisfied customer tells at least 4 others, a non-satisfied customer tells 10 others. That means you lose opportunity of 9 more business individuals to come back to you because you have failed on one. And cost of acquiring a customer may be what kind of customer it may be, even though there is a shortage of hospitals, but there is a shortage of competitive doctors. And these competitive doctors spending time in wasteful activities needs to be removed. And the hospitals which have realized this, and somewhere I'm also trying to use this opportunity to also motivate management to start focusing and calculating, because no businessman would spend money unless he or she is benefited by the initiative. So, so just sharing this perspective that there are perspectives that, take these initiatives because they benefit you as a hospital owner. They benefit in your balance sheet, which is evident. And I was fortunate to demonstrate this to a top management of QCI and win a Dear Shaw Award from the President of India, APJ Abdul Kalam, because there was a competition done on economics through quality. Because to my mind, quality and cost are aligned to each other. The moment you improve quality, the cost goes down radically. Well, you need people to retrain, you need people to express to dissatisfied customers. You also lose business which you had come without any sales effort, but you don't get that business. So this is in brief I wanted to share, and I have seen this happening in hospitals. I've seen this happening in manufacturing organizations. Along with Shed South. And this creates so much of commitment at operation level. I've also had the fortune to implement it in Anganwadi years back in Kerala. I've also had the fortune to make this change happen in Vridh home in around Delhi. So there's a concept called 5S, which is called as cleanliness. Seri, Siton, Siso, Shaikatsu, Shitsuke, which means set in order, sort, set in order, shine, sustain, standardize, which is basic cleanliness. Cleanliness of my laptop. Suppose my laptop is clean, the subjects which are in an order, my retrieval time comes down to 1/10. I have done this calculation because suppose there are about no folders. I have seen in this Anganwadi and also in senior citizen or Vridha Ashram, the patients or the representatives themselves implementing 5S, and their fitness level went higher, much higher. Much higher. The kind of disease which used to come earlier and the kind of disease which come now are substantially lower. So these concepts are very popular in
They started from manufacturing industry, went to service industry, banking, they went to software industry. I mean, a lot of healthcare industry, including the one which we worked for, including the hospital which I have seen as a judge of DHA award for the last 10 years, have improved radically using these thought process or using these principles or guidelines. These are some of the points I thought, let me put it across to the learned representative sitting out here. Interestingly, I took one of the senior person to a hospital, and the senior was very senior, about 1995, and they were trying to avoid him, and he gave me a statement कि डर के चलता है हर कोई गिरती हुई दीवार से. So thank you for the opportunity, sir. Thanks a lot. I would want to keep hearing you, but I think we will give opportunity to others who have come, and particularly Ramaiah ji. Dr. Ramaiah has joined us from USA. Dr. Ramaiah ji, welcome, and please share some thoughts on patient safety and what we are discussing here. Sorry if I've delayed. Thank you so much. Thank you. You are not being heard, sir. No. Okay, you fix it. I will invite. There you go. There you go. Not yet. Not able to hear, sir. Would you consider using the mic and of the laptop or the instrument, because no, he's not able to hear us, Arun. Ramaiah ji, you please fix that and I'll come back to you, sir. Please try to fix it. You can try send to an fix it. SMS to him. You can send an SMS to him. Yeah, we'll do that. We also have a lot of our people from RJS group, and maybe one by one I could invite them. Mohammad Ishaq Khan ji, आपकी क्या सोच है इसके बारे में? प्लीज बोलिए, आप म्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर. देखिए, जो भी मैं थोड़ा बहुत समझ सका उसके हिसाब से पहले जो प्रोफेसर मिश्रा संबोधन कर रहे थे, तो उसमें प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है. तो क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी बातें तो हम सुन रहे, लेकिन सारा कुछ काम पर होता है उसके उत्पादन को लेकर. मेरे ख्याल से हिंदी सकते हैं, मैं थोड़ा सा अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा. मैं सोचता हूं कि इसके से जुड़े जो श्रमिक वर्ग है उसके एजुकेशन के लिए भी इसमें भरपूर उपाय होने चाहिए, जिससे कि में गुणवत्ता हो सके. तो इसका जो उत्पादन है वो सीधे सीधे, ठीक है, मैनेजमेंट उसमें सब कुछ करता है, उसमें टाइप करता है, उसका पैकेजिंग करता है, सब कुछ है, लेकिन जो उत्पादन श्रमिकों के द्वारा होता है हाथ से, तो उनके ट्रेनिंग और उनके प्रशिक्षण की बहुत जरूरत, जिसे हम श्रमिक शिक्षा कहते हैं. बस यही कहता है. ओके सर, थैंक यू, थैंक यू. संदीप जी, संदीप साहू जी, वुड यू लाइक टू शेयर सम थॉट्स? आज पेशेंट सेफ्टी के ऊपर जो परिचर्चा हो रही है एक यूनिक विषय है. ये ज्यादा चर्चित विषय नहीं है, लेकिन इसको चर्चा में लाने के लिए ही ये चर्चा की जा रही है. दूसरी बात ये है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, रेल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का जो है ध्यान नहीं रखा जाता है. अब आप अभी देखिए, नोएडा के अंदर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लिफ्ट गिर गई, 8 लोग मर गए. वहां पे भी सेफ्टी काउंसिल का कोई वो हिसाब किताब नहीं है. ये लिफ्ट क्यों गिरी, उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये जो इशाक खान साहब कह रहे थे ना, श्रमिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है. दूसरी चीज, हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ्टी बहुत ही जरूरी है. इसके गाइडलाइंस वहां पे लिखी होनी चाहिए कि क्या क्या इस सेफ्टी में शामिल होता है, और वहां के जो नर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है.
क्योंकि उनके बगैर प्रशिक्षण के वो पेशेंट सेफ्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे। दवाइयों के माध्यम से भी पेशेंट सेफ्टी को देखने की जरूरत है कि दवाई ज्यादा तो नहीं दे दी गई किसी को, ये ओवरडोज तो नहीं हो गया। दवाई का हिसाब किताब भी बिल्कुल सही होना चाहिए, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी के अंदर ये भी शामिल मैं समझता हूँ। जी बस इतना ही कहूंगा, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये यही हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि इन हेल्थ केयर पेशेंट्स हैव टू बी वेरी मच अवेयर एंड दे शुड बी इन्फॉर्म्ड पेशेंट्स। इनका भी एक रोल होता है, बीइंग इन्फॉर्म्ड पेशेंट्स। जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं तो आपको थोड़ा समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। एंड प्रिस्क्रिप्शन को भी अंडरस्टैंडिंग करना अच्छा है, जो भी समझ में आए, एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी मेडिसिन कभी लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे डाइट के साथ लेनी है, और मेडिसिन के पीछे जो लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी एंड बैच डिटेल ध्यान में रखना चाहिए। कायदा कानून के अनुसार तो 6 महीने जब रह जाते हैं मेडिसिन को एक्सपायरी में, तो वो धीरे धीरे पोटेंसी उसकी कम होती जाती है। ये पेशेंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास मेडिसिन बची है, हम सबके पास होती है ये मेडिसिन का, हम हाउ टू डिस्पोज दोज मेडिसिन, ये है, ये व्यवस्था नहीं है। The ideal व्यवस्था that was thought of was that these medicines will go back to the pharmacy where you bought them. Yes. And ultimately it will reach the manufacturer and he will dispose them off as per the guidelines which are given in the Ministry of Environment. Safeguarding everything. हम लोग ने जब प्रोजेक्ट किया जिसमें बिजौंदा और मैं थे दोनों, we examined 50,000 medicines, whether they were substandard, whether they were spurious or adulterated. And in that we were left with a lot of medicine after we tested them. And we had invited the pollution board people from Uttar Pradesh because it was in Noida at the National Institute of Biologicals. And in presence of central government people and other people, they were properly destroyed. That means they had, something had to be incinerated, something had to be made into bricks, and then ultimately they get buried. ये सारा जो प्रोसीजर है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्पोज कैसे करनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग कैश मेमो भी नहीं लेते हैं। कैश मेमो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुई और क्वालिटी की प्रॉब्लम हुई तो कैश मेमो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें डूज और डोंट्स होते हैं। हम एक हॉस्पिटल में जहां जाते हैं बड़ौदा में, उस हॉस्पिटल में पूरे पेशेंट के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके भी आप सबको भेजूंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वी मस्ट विजिट अवर हेल्थ स्टेटस रेगुलरली। ये जो चीजें हैं हमको एजुकेट करना पड़ेगा। और इसमें जो अशोक कुमार मलिक जी ने भी कहा, कॉम्पिटेंसी जो है डॉक्टर की, नर्सिस की, फार्मासिस्ट की, टेक्नीशियंस की, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, ये तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से पेशेंट की भी कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। Of course, for manufacturing, you have people like NABH. And when Arun Malik Saab was talking about these companies, I had a good fortune or bad fortune to work on a 2-member committee which was set up by our greatest institution in India, which deals with all such cases. And that was the National Human Rights Commission. And I was sent to Shimla along with a very senior colleague, Dr. Nityanand, who was president or the director of the National Drug Laboratory in UP. It's called CDRI, Central Drug Research Laboratory. Dr. Saab was a very senior person, also awarded the Nehru Puraskar. हम दोनों गए वहां पे और हमने हॉस्पिटल, एक छोटी हॉस्पिटल थी 100 बेड की,
और उसमें मुझे आपको जो इंट्रावीनस लिक्विड आता है, तो डॉक्टर ने रात को देखा ये व्हाइल डिस्पेंसिंग दिस, तो उसमें फंगस था। तो इसने कंप्लेंट किया वहां पे लोकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उन्होंने एज पर द प्रोसीजर जो काम करना था, क्योंकि अल्टीमेटली देयर प्रोसीजर इज टू देन go to the central government, then get in touch with where it was manufactured, and etc. etc. It was manufactured in Ahmedabad by a well-known company. But कुछ हो नहीं रहा था। उतने में क्या हुआ सर कि ये प्रॉब्लम सफदरजंग हॉस्पिटल में भी पाया गया दिल्ली में। In the night time duty, a nurse noticed it, and next day there was a big write-up in the Indian Express. And that's when everybody got alerted. Or National Human Rights Commission from Simla started it, and उसमें VIP की 3000 से ज्यादा TDS के लोग पानी पीते हैं। तो ये जो हुआ 55 से ज्यादा की वजह से NHRC had set up this project. तो वहां पे क्वालिटी पॉलिसी हर एक नर्सिंग होम की होनी चाहिए, हर एक हॉस्पिटल की होनी चाहिए। हमें लगा कि इसके ऊपर हमें ही कुछ काम करना चाहिए। और नाइन ईयर इस गांव में हम इन्फॉर्मेटिव को जीरो कर पाए। लास्ट 9 ईयर इस गांव में हम कुपोषित बच्चों की मात्रा को जीरो कर पाए, और हमने लोकली रिसोर्सेज को यूज किया है। हमने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को क्लब किया। आंगनवाड़ी बहनों और आशा वर्कर बहनों को मिलकर बोला कि जितनी की गर्भवती महिलाएं है उनका प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट करवाए, उनकी प्रॉपरली हम चेकअप करवाए। हमने PSC के साथ लोकली डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट किया। गांव में अगर कुपोषित बच्चे हैं तो गांव में दूध मंडली अमूल के साथ बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो हमने दूध मंडली के साथ सहयोग किया कि गांव में जितने लोग कुछ बनाने के लिए आ रहे हैं तो हम बाजू में पार्टी रखिए गांव की। Okay, so that is what I was telling you. We also have Surjit Singh Kohli, Didewarji. Sir, would you like to share your thoughts? आप जरा अनम्यूट करिए सर। दिदेवर जी थोड़ा अनम्यूट करके आइए। कर लिया। थैंक यू जी। थैंक यू सर। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम यहाँ पर पेशेंट की बात कर रहे हैं, और पेशेंट हम उसे ही मान रहे हैं जो शारीरिक रूप से किसी तरह के उसको कोई रोग है या तकलीफ। दीदेवार जो है उस थॉट की बात करता है कि उस पे अगर चले तो पेशेंट बने ही ना शारीरिक रोग पे, हमें वो ध्यान देगा। और अभी जो बात हुई है श्रम के ऊपर, तो हम श्रम के लिए कार्ड बनता है सरकार की तरफ से। मेरा सुझाव है सरकार को कि श्रमिक कार्ड से पहले उन्हें 3 या 4 वर्कशॉप दी जाएं कि जीवन के अंदर कैसे सेफ्टी ली जाए, प्रिकॉशन ली जाए। जो अभी आपने लिफ्ट के लिए बार है उसके जो ऐसे कुछ और भी चीजें हैं वो कार्ड तभी मिलेगा या 3 या 4 वर्कशॉप फ्री ऑफ कास्ट, और उनके अगर उनकी दिहाड़ी भी दी जाए तो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से नॉलेज होनी जो है, प्रिकॉशन जो है वो ज्यादा है कि वो उसकी सेफ्टी खुद देख पाए। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार होने के बाद हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन एक्सपायरी डेट की है या डॉक्टर के पास है या नर्सिस के पास है या हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है। दीदेवार हमेशा यह लगता है कि मैं बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लें। उसके ऊपर सबसे बड़ा थॉट है कि मैं अपने आप को साथ ईमानदारी करूं, और अपने ईमानदारी के लिए मुझे क्या खाना है, कब खाना है, समय से खाना है या जब भूख लगी है तब खाना है, क्या खाना है। अगर मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मेरी लालसा है मगर मैं स्वीकार भाव से खाता हूं तो वो मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, और अगर मैं डर के भाव से खाता हूं तो वो मुझे रोक देता है पिनाशी। ये मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है कि हम किसी तरीके भी जो है कर लगे। और एक जो हमारी संस्कृति के अंदर जो चीज है वो आज उसको हम आउटडेटेड मानते हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हर महीने अगर हो या महीने में 2 बार या सप्ताह में जो कर सके 1 बार उपवास जरूर रखे, क्योंकि हमारा जो खाना है वो हमारी इंद्रियां खुद पचती। जैसे किसी गृहिणी को अगर
किचन में रात को इमरजेंसी में कोई रिश्तेदार आ जाएं, मेहमान आ जाएं तो खाना बना लेती है, जो भी छोटा मोटा बनना उससे वो बना लेती है। तो इसी प्रकार अगर हम वीकली एक बार उपवास लेंगे तो हमारा शरीर के बाकी चीजें जो अंदर हमारे में खाने में बने हमारी इंद्रियों से खाली कर देंगी और हमारा पेट भी साफ होएगा, हमारा यूरिन भी अच्छा पास हो जाएगा और हमारे को नींद भी आएगी अगर एक बार लेते हैं। ये उपवास जो है हमारी संस्कृति में उसके पीछे साइंटिफिक रीजन था, उसको किसी ना किसी धार्मिक विचारों से जोड़ा गया है क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे और कोई माध्यम नहीं था उन्हें समझाने के लिए, इसके साथ उनका उद्देश्य ये रहा। और सबसे बड़ी बात है, हम कोई भी खाना खाते हैं, मेडिकल ये कहती है कि 4 घंटे बाद उसे हजम होता है, मगर मैं कहता हूँ कौन सा खाना कैसे खाया इसलिए उसे समय लगता है। अगर हम फल खाते हैं तो 2-2.5 घंटे लगता है, अगर हम अनाज खाते हैं तो उसे 4 से 6 घंटे लगते हैं, और हम अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसे 12 घंटे लगते हैं। इसीलिए मैसेज की तरह आप देना चाहेंगे पेशेंट सेफ्टी को लेके, गुणवत्ता को लेके, हमारे बेसिक मिशन को लेके कि कैसे क्वालिटी को, कैसे पेशेंट सेफ्टी को हम लास्ट इन द लाइन को कराएं ताकि अनइंटेंडेड हार्म, जो डॉक्टर धीरज शाह ने कहा कि आज उनका सपना है, हम सबका सपना है कि हम कोई गलती ना होने पाए। मेरा केवल एक ही सवाल है कि यदि कोई भी NABH लिखा हुआ हो, हम यदि उसके अंदर चले जाएं, हमको ये महसूस हुआ एज अ पेशेंट कि हम इस अस्पताल को 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और ट्रस्ट मतलब इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज अकाउंटेबल and it is high in quality, and high in quality means patient delight. यदि हम खुश हुआ, यदि मोकाम्बो खुश हुआ तो दुनिया खुश हो गया। तो मेरा केवल एक ही संवाद ये है कि हमको टैंजिबल्स बनाना है इंटेंजिबल्स को, कि इंटेंजिबल है जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको टैंजिबल करेंगे। और हम चाहेंगे कि फर्स्ट कंट्री हो इंडिया, जो हम कई स्टडीज देख चुके हैं जहां पेशेंट्स के बारे में कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टडी NABH करेगा जो पेशेंट का दर्द टैंजिबल रूप से सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शबनम मैम। जब तक हर इंसान, all citizenry in the country do not become accountable and responsible for their health, patient safety नहीं आएगी। तो हमारा लक्ष्य ये है, कर्तव्य ये है कि हर बच्चे को हम सिखाएं, बिल्कुल जैसे हिमांशु ने कहा है मॉडल विलेज में, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाथ कैसे धोएंगे, आप अपने आबो हवा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जब अस्पताल जाएंगे आप क्या पूछेंगे, आपका अस्पताल NABH एक्रेडिटेड है, उसमें आपने सारे अपने इक्विपमेंट ठीक रखे हैं, डॉक्टर सही ट्रेंड है। जब तक आपको खुद नहीं पता चला है, आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे और उसका उत्तर जो आएगा आप समझेंगे कैसे। So मेरा ये, this is my single point, empower people. कौशल उपाध्याय सर। जी जी। हाँ, मेरा उद्देश्य यह था कि बीमारी होने से पहले ही करें, और बीमारी जो है मेरे सिर्फ थॉट के ऊपर होती है, मानसिक जो है मेरा विचार कैसा है। सो अगर उपवास को करेंगे तो उपवास जो है हमारे लिए, जो हमारा एक्स्ट्रा खाया गया जो अभी हमें पचा नहीं है, तो हमारे भीतर की इंद्री हर वो चीज पचा लेती है। और दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम नॉनवेज खाएं या ऐसा टॉनिक खाएं या बहुत कर रहा होता है। हम जिस चीज को हजम करने में ज्यादा ताकत लगती है, हमारी इंद्री उसमें ज्यादा कंज्यूम करती है और वो वीक करती है। हमारा आहार वो होना चाहिए कि जिसमें इंद्रियों का काम कम हो। मेरा जो दांतों का काम है अपनी आंतों से ना लूं, मैं अपने को बचा के खाऊं, समय से खाऊं, तो मैं नहीं समझता कि जितनी भी बीमारी है
वो किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है, इवन बीपी और शुगर भी कभी नहीं होगा अगर इसको फॉलो करेगा। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। और हो सकता है कभी बाहर से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मच्छर काट लिया, वो तो एक्सेप्शनल है, उसके लिए तो ट्रीटमेंट है, मगर ये प्रिकॉशन जो है मैं अपने आहार पे ध्यान रखूं। और आहार दो प्रकार का होता है, एक आहार होता है मेरे शरीर का और एक आहार होता है मेरे जीवन का। अगर मैं अपने जीवन के आहार पे ध्यान दूंगा, आंखों के माध्यम से लेता हूं, कानों के माध्यम से लेता हूं, नासिका के माध्यम से लेता हूं, अगर उस आहार पे मैं अगर ध्यान रखूंगा, इसके अंदर पुण्य और पाप नहीं है, इसके अंदर कोई गलत और सही नहीं है। मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से विचार क्या है, मेरे को क्या सही है, मेरी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और मेरा दिनचर्या क्या है, उस हिसाब से मेरी आयु क्या है और मेरा परिवेश क्या है, उस हिसाब से मैं किस परिवेश में रह रहा हूँ, गर्म जगह में रह रहा हूँ, सर्द जगह में रह रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरा आहार होगा। पर आहार अगर मैं अपने विचारों के द्वारा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से मैं स्वस्थ रहूंगा और मुझे मेडिकल की जरूरत बहुत अव्वल तो पड़ेगी नहीं, पड़े तो बहुत कम पड़ेगी। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि हम अपने विचारों के ऊपर एजुकेट करें, प्रिकॉशन लें, और इन चीजों को जरूरत तो है इस पे ध्यान दें, पर मेरा जीवन का उद्देश्य ये होना है कि मुझे इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। दीदेवा इस पे ही काम कर रहा है। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। निदेवार जी ने बहुत सुंदर बताया आहार और फास्टिंग के लिए, वेरी गुड प्रैक्टिकल टिप्स। नाउ I saw Professor Mundi Kumari also a little while ago. Are you there, Mundi Kumari ji? Are you still there or no? I think she is left, it looks like. So then in that case, we still have some time left before I hand over to Veena ji for concluding remarks. Would any one of you still share some thoughts? Would like to share thoughts? We still have a little bit of time left. ओपन कर दीजिए प्रफुल्ल भाई, सबके व्यूज दीजिए, सबके कोई डिस्कशन पे जाए। हाँ जी, अगर आप ओपन कर दें तो एवरीबडी कैन शेयर जो भी हमारे स्पीकर बोले हैं या कुछ उन्होंने। हाँ, तो ओपन, इट्स एन ओपन सेशन नाउ, इट्स एन ओपन फोरम. That's what you mean? Yeah. People can, yeah. So it's an open forum now. I think we have invited most of you. I think we can open the forum. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है इस what is a safe patient, let us say. How do you define a safe patient? Exactly. How do we define a safe patient? What should be the definition of a, क्या व्याख्या क्या हो सकती है सेफ पेशेंट की, उसके बारे में थोड़ी बात की जाए, बिकॉज हमने काफी पॉइंट्स रखे हैं और वहां से भी कुछ हमें बिजॉन्दा से भी कुछ पता लगा है कि ये क्या होना चाहिए वगैरह। अभी आप बताइए मुझे कि व्हाट इज अ सेफ पेशेंट, कौन, हु वुड लाइक टू डिफाइन अ सेफ पेशेंट? डिफाइन नहीं, मैं मगर कुछ कहना चाहती हूँ अगर आप परमिशन दें। प्लीज गो अहेड बीना जी, प्लीज गो अहेड। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, ये मेरे को काफी दिनों से दिमाग में है जो आज आपने इशू उठाया है कि व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी। क्या उसका बेड अच्छा होना चाहिए या हॉस्पिटल साफ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? पेशेंट सेफ्टी, पहले तो हमें ये पता करना चाहिए पेशेंट सेफ्टी, मेडिसिन अच्छी हो, डायग्नोज अच्छा हो, या वो राइट प्लेस पे जाए, या डॉक्टर उसको मिसगाइड ना करे। दीज आर द थिंग्स जो हमें पेशेंट सेफ्टी में, मुझे जो लगती है सोचने के बाद, कि हमको इसको हाईलाइट करना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स। क्योंकि एक वर्ड, एक पेशेंट सेफ्टी वर्ड इज ए वेरी वेग, इसमें हाइजीन भी आती है, आपके डॉक्टर का कंसर्न भी आता है। और जैसे अभी अरुण मलिक जी ने बताया कि 95 के किसी पर्सन को वो लेकर के गए, 95 का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर इग्नोर कर। लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड लाइफ इज लाइफ। सो ये हम लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि शायद ये एक वो चल गया है कि भाई इतने हो गए, बस एनफ, काफी जी लिए है, मगर ये बहुत ही गलत साइकोलॉजी है। और इसको हमें देखना चाहिए कि वो चाहे 100 साल के हो जाए,
but doctor he has to do or she has to do her or his responsibility, and with full care and full thoughts and full पूरी तरीके से उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। दूसरा में ये है कि हमें देखिए इसमें जो बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं जो मैं सोच रही हूँ, हमारे सुरजीत सिंह खाने पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं जो डॉक्टर का पार्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए न्यूट्रिशन वाले का या फैमिली का या वो उसका, मगर इसमें उनका बहुत अच्छा ये है। और मलिक साहब ने किसी पॉइंट पे शायद ये भी कहा है कि हम हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान दें, एंड बिल्कुल सही बात है कि आजकल हमारे पास ये देखिए कि बहुत लोअर सैलरी पे हमारी नर्सेज आ जाती हैं हमारे पास, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, नर्सिंग होम खुले हुए हैं। और यहाँ तक है जो मैंने देखा, क्योंकि मैं एनजीओ से बिलोंग करती हूँ, कि एनजीओ जो जगह जगह चला रहे हैं नर्सिंग ट्रेनिंग, उससे भी हॉस्पिटल उनको हायर कर लेता है। अब वो वी डोंट नो दे आर फुली ट्रेन्ड और दे आर नॉट फुली। सो कहीं कहीं दिक्कतें ये भी आ रही हैं कि हमारी कोई उस पर कोई चेक नहीं कि हमको ये चेक करें। कोई भी एनजीओ अगर चला रहा है तो उसका सर्टेन ये होना चाहिए, जब तक उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तब तक वो शी कैन नॉट जॉइन एनी जॉब और एनी। तो ये बहुत से इश्यूज मैं समझ रही हूँ, मगर आई वांट टू गिव टाइम टू अदर्स आल्सो। मगर यहाँ सबको बहुत अच्छी तरह मैंने सुना और मुझे बड़े अच्छे इसमें पॉइंट मिले। तो प्लीज मैं तो आई विल ऑन एंड ऑन, बट आई वांट टू ब्रेक माय सेल्फ हियर। Each one of us have got interesting experiences. सुदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोविड आया तो कोविड ने हिंदुस्तान की जनता को हाथ धोना, हाइजीन, मास्क पहनना ये सिखाया। ये भी एक पेशेंट की सेफ्टी का जो है बेसिक टूल है। और ये आज भी मैं देखता हूँ कि लोगों को सड़कों पर, जबकि इस वक्त मास्क अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है मास्क लगाए रहते हैं। मास्क लगाए रहने से कम धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन उनके फेफड़ों में नहीं जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है। और हाथ धोने की और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की ये भी एक आदत पड़ गई है कि हम लोग, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं सैनिटाइजर इस्तेमाल करने में। तो उन पे भी जो है समझना चाहिए कि भैया वो भी नुकसान कर जाएगा आपको। तो यही कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद। पागलपन की हद होता है। वेरी नाइसली पुट। नो, यू आर राइट सर। कोविड ने डरा के ऐसा रख दिया था सबको कि वो बस अपनी जिंदगी का ही ख्याल कर रहा था। अरुण, यू वांट टू ऐड? आप जरा अनम्यूट कर दीजिए। नहीं सर, मैं काफी कुछ तक सुरजीत सिंह के ओपिनियन से भी एग्री करता हूं, क्योंकि जो अपने कंट्रोलेबल है, जो मेरे कंट्रोल में मेरे अपने प्रति, पहले मैं उन पे काम करूं, फिर मैं बाहर झांकूं। जैसे कि पिछले 5-6 साल से हम लोग गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कैसे खाना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, क्या क्या कार्य कैसे, मतलब हर एक को बड़ी विस्तृत रूप से दिया गया है। और शायद, माफ करना लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शायद इस फिलॉसफी को तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बचपन से ही सिखाया गया होता। तो मैं देखता था हमारे माता पिता पढ़ते थे, चाहे गीता है चाहे रामायण है, या शास्त्र है। शास्त्र मुझे समझ नहीं आते, हालांकि कोशिश कर रहा हूं मैं। ये सब हमें कैसे लाइफ रहना चाहिए, उसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कई श्लोक हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। हमसे मतलब 6-7 आदमी मिलके ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो हेल्थ और हाइजीन और कर्म कौन से आस्तिक है, कौन से राजसिक है, कौन से
सात्विक हैं और राजसिक हैं और आस्तिक हैं, सबको सेग्रीगेट करते हैं। और कोशिश हमारी है कि किसी दिन हमें अगर मौका मिलेगा तो हम बहुत छोटे लेवल के बच्चों को जाके भी सिखाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये लाइफ कैसे जीनी है उस दिशा में हर एक को सिखाएंगे। ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, यही चीज मेरे को लगता है गुरु नानक देव जी ने भी सिखाई है या किसी भी जैन धर्म ने भी सिखाई है। ये कोई धार्मिक नहीं है। माफ करना अगर मैं किसी की पर्सनल उसमें इन्फ्रिज कर रहा हूँ, लेकिन ये लाइफ कैसे जीनी है उसके रास्ता है, और कैसे आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे, फिट ह्यूमन बीइंग बनोगे, कैसे एक पिता का रोल है, सब सिखाता है। और ये मेरे को लगता है हेल्थ सेफ्टी में भी काम करेगा, लेकिन ये मतलब बहुत लॉन्ग टाइम लेगा, लेकिन कभी ना कभी हमें इसको शुरू करना पड़ेगा, जो मेरी ओपिनियन है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। No, very well said. Very well said, Arun. Very well said. Very well said. Ashok Kumar Malik ji. म्यूट करिए सर म्यूट करके आइए। Thank you very much. I've listened to Bina Jainji. She is very sensitive to, because coming from a person who has headed such an important organization, her sensitivity to this old age, and that's very touching. And I know whatever the age, life is sacred. And I fully am conscious, and everyone should be, that we have to preserve life and we have to preserve the dignity of old age also. Also, I would like to focus some attention upon the a kind of, if I may be using the term, pandemic of depression in society, whether ostensible or below the surface, in families where domestic violence is widespread, and from urban to rural side, where people are unhappy and people are not even aware, and students, they commit suicides. So the definition of a patient is, as we have earlier touched upon, this very important, because definitions are important in order for clarity. To whatever extent we are able to define. So it's not that you don't have diseases. You see, merely because may not be having any outside ailment which can be seen or understood. But I think in that sense, as Praful Nisetji had asked about the definition. Connectivity. I think we have lost connectivity. Yeah. Ashokji, your connection is weak. He will try to re-enter. Now, sir. You please unmute, sir. Please unmute. Ashokji, please unmute. Yes. No. Mute हो गए फिर. सर आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, कि वीडियो आपकी कैपेसिटी ले रहा है. आपको Hello. Can Yes. Please go ahead. Please go ahead. So my definition, my answer to your question was that in modern civilization, we have come to a stage where humanity is turning into a patient. Yeah.
Yeah. It is rather Very well said. Well yes, said. humanity is a patient, and that is why it is troubling earth. So we will have to keep every discussion and deliberation on this vital issue in this within this overview. And in our urban settings, people are depressed. People avsad mein hain. They are not happy. They look happy. This artificial frivolity and jolly merriment is common. Party going and all that, But somewhere, they are suffering from some kind of sadness, some kind of dissatisfaction with. And time constraint will not allow me to go into so many details of it. Yeah. And it can be understood. It can be understood. So my definition of being a patient is that I think there is hardly a person who is not a patient these days. Yeah. Thank you. Now we have five minutes left. Yeah, Sudeep ji. इस डॉक्टर रमैया साहब दिख जाते हैं बीच में, उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए। डॉक्टर रमैया साहब तो निकल गए हैं और आई डू नॉट हैव हिज फोन नंबर। एक बार बीच में आए थे, वो दिखाई दिए थे। आए थे, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम अबाउट अच्छा communication. I think there was some problem. So otherwise he is very well known person in US on orphan disease drugs for orphan diseases, and I was very much wanting to hear from him, but unfortunately we couldn't connect. So I think we have about 3 minutes left. Binaji, before you come, a request from Dedevar ji. हाँ जी देदेवार जी। हाँ जी, मैं ये एक बार और समय है इसलिए उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। समय नहीं है ज्यादा, बट आप 2 मिनट लीजिए। हाँ, तो फर्क ये है कि मेरा शरीर ही मेरे को इंफॉर्मेशन देता है हर चीज की। तो जैसे ही मेरे शरीर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, नासिका द्वारा, आंख के द्वारा, पेट के द्वारा, या किसी खारिश या किसके द्वारा, तो उसी समय मैं अलर्ट हो जाऊं तो मैं अपनी प्रिकॉशन से उसमें मेडिकल सेफ्टी ले लेता हूं। मैं अपने शरीर की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता हूं, इसलिए मैं ज्यादा बीमार हो जाता हूं। सो मेरी जीवा जैसे है कि मेरे जीवा, अगर मैं एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहता हूं, मेरी जीवा जो भी स्वाद लेती है वो हमेशा मुझे सच्चा स्वाद देती है। अगर मैंने खट्टा खाया है तो खट्टा बताएगी, मीठा खाया है तो मीठा बताएगी, कड़वा खाया तो कड़वा बताएगी। वो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन स्वाद की देगी, मगर बाकी उसको खा के मेरे शरीर में, मेरे पेट को कैसा लगा या मेरे कहीं पर भी शरीर के दूसरी त्वचा से कैसा महसूस हुआ, वो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं उसमें अलर्ट रहूंगा और सजग रहूंगा तो मैं नहीं समझता कि मुझे किसी प्रकार की मेडिकल की आवश्यकता होगी। अगर हम इस पे ध्यान दें, ये डाइजेशन का काम नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का, समाज का और टीचर्स का काम है कि बच्चे को उस जो ग्रोइंग एज है उसमें समझाया जाए। ये हमारे सबके समाज की ड्यूटी है, ये मेडिकल की नहीं है। मेडिकल तक हम पहुंचे नहीं, उससे पहले हमारे पूरे समाज की ड्यूटी है। दीदेवार जीवन ज्योति ये कार्य कर रहा है और मैं सभी से निवेदन भी करता हूं और सहयोग मांगता हूं कि हम इस बात को भी करें। एक ठीक है, आजकल मेडिकल का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, पर वहां से पहुंचने से पहले अगर हम गाड़ी को सही नियम से बनाएंगे तो एक्सीडेंट से बचेंगे। अच्छा ड्राइवर वो है दूसरे की भी गलती को पकड़ के सेफ डाले। तो मैं अपने जीवन के अंदर अगर पेरेंट्स हूं या टीचर्स हूं या सामाजिक किसी कार्यकर्ता या एनजीओ चला रहा हूं, तो मेरा दायित्व सर्वप्रथम ये है कि मैं कहां से बीमारी शुरू हो रही है उस पर रोकूंगा। आगे तो चलती रहेगी, पर पीछे अगर ज्यादा बढ़ के आ गई तो आगे कितना भी इलाज करें, पीछे से आता रहेगा, भीड़ आती रहेगी, रश आता रहेगा। हमें उसको भी रोकना है, बराबर काम करना होगा। जो डॉक्टर अपना, जो बीमार है उनका करें और सोसाइटी के लोग अपना काम करें, दोनों को पैरेलल करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। थैंक यू सर। नो योर बॉडी। Now, Binaji, kindly do the concluding remarks, please. Thank you, Seth Saab. First, I'll thank you that in your leadership, every speaker spoke very well, and I think few points we discussed in detail also. And but it's a very vast subject, and today's all the speakers are concerned. I think everyone is concerned. And जो हमने जो conference is going on, and somebody told that positivity
जो इंक्रीज करती है, इसे लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ लॉन्ग के लिए होती है, एंड नेगेटिविटीज लाइफ इज वेरी शॉर्ट. सो ये पॉइंट हमें सुजीत कोहली जी के की बात से भी मिलता है, क्योंकि पॉजिटिविटी होगी तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हम उसको उसी तरीके से पॉजिटिविटी में लेंगे. और छोटी छोटी बीमारियां या कुछ भी है, साइकोलॉजी से भी बीमारियां बहुत हो जाती हैं. और नेगेटिविटी होगी तो ऑल द टाइम वी फील दैट वी आर इल, वी हैव पेन हियर एंड देयर एंड देयर. सुजीत कोहली जी, आपने जो आज टिप्स दिए हैं, दोज आर वेरी वेरी नाइस. एंड अगर हम उनको अडॉप्ट करते हैं और हमारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम हमारे को हेल्थ की नहीं रहेगी. मगर इससे मेनी थिंग्स जो हेल्थ के ऊपर जा रही हैं, हमारा फूड जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी आर हैविंग चारों तरफ, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काउंट भी करेंगी. उस पर भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दें तो हम मेरा ख्याल अच्छा कर जाएंगे. और पेशेंट सेफ्टी का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सेठ साहब कि इसका थोड़ा सा गाइडलाइंस बनाएं. Then we can go forward to tell people, because as a NGO where I'm working, we can tell them that these are the points you discuss in each and every program. Because they are having different program, but we don't know the points. What points we have to tell them. So इसका थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है. और हमारे जो अशोक मलिक जी तो बहुत बढ़िया बोले, मगर उन्होंने एक पोयम नहीं सुनाई शायद हमें. और क्या ही इज अ पोएट. एंड बेटर ये है कि हम थोड़ा सा क्लीनिनेस का भी ध्यान रखें. और ये जो एटीट्यूड है डॉक्टर्स का कि वे बहुत कैजुअल होता है कई दफे, दैट इज रॉन्ग. उसको ये सोचना चाहिए कि जो उनके पास जाता है, दैट इज उसको रियली ही इज कंसर्न, मतलब ही हैज और शी हैज सम प्रॉब्लम, दैट पेशेंट हैज सम प्रॉब्लम. आधी मेरे को थोड़ा सा मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पेशेंट आधी प्रॉब्लम भूल जाता है इफ द डॉक्टर टॉक टू हर प्रॉपरली एंड गाइड दैट पर्सन प्रॉपरली, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है. जैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं, बहुत से पुराने लोग कहते हैं कि भाई पंडित कोई अच्छी बात बताता है तो एक कॉन्फिडेंस जागता है. उस सिमिलरली डॉक्टर अगर कुछ कहता है तो पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है. एंड हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आए हैं और बजौंदा तो हमारे वहाँ बोल ही रहे हैं बड़ी जोर से, और उनकी आवाज और उनकी तो बात गवर्नमेंट तक जाएगी ही जाएगी. मगर मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों को सबको मिल करके ये मेडिसिन और सेफ मेडिसिन पे अगर हम सभी लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो वी कैन रीच ऑन सम पॉइंट. एंड सोसाइटी के लिए दोस्त आर कंसर्न, जो लोग कंसर्न है इस इशू के ऊपर, तो हम कुछ सोसाइटी को दे पाएंगे. एक मैं और छोटा सा बात बताना चाहती हूँ कि हमारी एक ब्रांच जो मयूर विहार ब्रांच है, वो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में 3 लेडीज रोज जाया करती थी जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं, उनको पढ़ के सुनाना, कैसे लेना है, क्या खाना है. तो those 3 women, they were in touch with that doctor and asked जल्दी, क्योंकि डॉक्टर हैज लिमिटेड टाइम, उससे पूछ करके वो पेशेंट को पूरी तरीके से गाइड करती. दैट सिस्टम इज ए वर्केबल एंड वेरी नाइस सिस्टम. और इस तरीके की लोगों को अगर थोड़ी बहुत हम सेवा दे सकें तो इससे वेरी गुड सेवा. और आज के जितने भी स्पीकर्स ने, बहुत ही वैल्यूएबल स्पीकर्स ने जो हमारी पॉइंट्स रखे हैं, दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा सेठ साहब, और मैं आशा करती हूँ कि हमारा कोई ना कोई पॉइंट इसमें से निकल करके आएगा. धन्यवाद. Thank you very much. धन्यवाद. Thank you to all the participants for coming on this Sunday and taking part in these important deliberations. I think this has been our first experience of having a physical and a virtual meeting.
and I can say that it was very successful. Mannaji was at the Meridian Hotel along with Praful Pandey and Didewar जी भी वहीं थे शायद और अभी भी है वहाँ पे और वो वहाँ से जुड़ गए और हम सारे यहाँ पे वर्चुअली जुड़े हैं। तो एक सुबह हमें जब बात कर रहे थे एक दूसरे से तो हम सोच रहे थे कि वी होप कि आज का प्रोग्राम ठीक तरह से हो जाए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ है and I hope that you people were able to participate very freely and we had a good deliberations. I would also look forward to your suggestions how to improve in future this kind of deliberations. And it opens a totally a new horizon for the RJS and for the positive media, because Mannaji is trying to reach out in different ways. And I think this is one more feather in his cap. So thank you very much for participating. Have a good day and see you soon. हम सारे जा सकते हैं मेरे ख्याल से। क्यों? सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।